हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा जाऊँ पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंटेराटा। तो समस्ते शुणी पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, पॉलीमॉर्फिक फैमिली, पॉलीमॉर्फिक कास्ट, जैसे कि आम टर्माइट्स एग्जांपल नहीं पार्मा। टर्माइट्स आंट्स इन कॉलोनी सबके आम पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी कहीसु। बाकी ये केस गोटे वर्ड हो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म माने काଣା? पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल occurring in a single body, that is polymorphism. সেটা হচ্ছে কেন দেখা যাইছি আমার যেন এনিমাল ফাইলম অছন সিলিন্ড্রেটারে এটা এক্সক্লুসিভলি দেখা যাইছি। তো নেক্সট চলো ডিসকস করমা কারণ এটা মানে আমি ডিসকশন করমা ইন হোয়াট ইজ পলিমরফিজম, টাইপ অফ পলিমরফিজম, অরিজিন অফ পলিমরফিজম, প্যাটার্নস অফ পলিমরফিজম এন্ড সিগনিফিকেন্স অলসো আমি ডিসকশন করমা। ওকে, উইদাউট ডিলে লেটস স্টার্ট। तो डेफिनेशन देख सब। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? The occurrence of more than one type of structurally and functionally different individuals within a population is called polymorphism. माने structurally और functionally से माने different, बाकी से माने गोटे बॉडी रे लाई करूथिबे। The class Hydrozoa of phylum Coelenterata, आम जानछु Coelenterata तीनटा क्लास अछन, गोटे हाइड्रोजोआ, गोटे आंथोजोआ और गोटे सिफोजोआ। तो ये जन हाइड्रोजोआ क्लासेसटा अछन सेमानकर ना एक्सक्लूसिवली पॉलीमॉर्फिज्मटा शो हेसी। The class Hydrozoa of phylum Coelenterata includes large number of colonial species that contain more than one form of individual, which are called zoids. Coelenterata have two basic zoids, polyp and medusa. माने आम जदि zoids, what is zoids? Zoids होछन गोटे गोटे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जेन की इंडिपेंडेंटली एक्जिस्टेंस नहीं रखन, से माने मिसी करे सब बेले रहसन, सेटा होछे जोइड। तो बेसिकली दुई प्रकार जोइड्स अछन, गोटे होछे पॉलिप, गोटे होछे मेडुसा। पॉलिप माने काଣା देखमा, मेडुसा माने काଣା आके देखमा। तो एटा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंडरेटा तीनटा क्लास अछन, गोटे हाइड्रोजोआ इंक्लूडिंग हाइड्रा, ओबेलिया, सिफोजोआन्स रे की ओरेलिया जेंटा के जेलीफिश, राइजोस्टोमा। एंथोजोआ क्लास रे की अछन मेट्रिडियम, अडम्सिया, इ माने सब सेसाइल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, so what is polyp, what is medusa? Polyps has a tubular body with a mouth surrounded by tentacle. Polyp रो जेन बॉडी अच्छे तार बॉडी चारियाडे काଣା अच्छे टेंटाकल माने रहছে, এটা দেখছে গোটে পলিপ ইন্ডিভিজুয়াল रो স্ট্রাকচার। এটা হচ্ছে গোটে পলিপ, এটা হচ্ছে মেডুসা। মেডুসা ইজ এ bowl or umbrella shaped আছে with marginal tentacles and mouth is centrally located. এটা হচ্ছে umbrella shaped, marginal tentacles, centrally located mouth. Mouth is called manubrium on the ventral concave surface. गोटे होची convex surface और गोटे concave surface. Medusa are generally motile, concerned with sexual reproduction. Medusa is the concerned with sexual reproduction. What is polyp? Polyps are the sessile organism. माने गोटे जगह रे से माने स्थिर होई किना रहबे. They are blind and usually attached to pedal discs to substratum. Polyps are concerned with feeding, protection and asexual reproduction. Not a noticeable point होचे polyps concern asexual reproduction and they form medusa, and medusa perform the sexual reproduction and they produce polyp. माने polyp रो medusa बनुछन, medusa रो polyp बनुछन, सेटा होची मेटाजेनेसिस और ताकर लाइफ साइकिल हेंता चलसी। तापर नेक्स्ट स्टेज देखमा हमें मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप। तो ये जन सेसाइल ऑर्गेनिज्म, सेसाइल बींग्स माने सेसाइल जॉइड्स माने सेमानकर मॉडिफिकेशन टा हेसी। मॉडिफिकेशन देखमा गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रो माने काଣା जिंछ हमें गैस्ट्रो मीन्स आमर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ह्यूमन बॉडी रो। तो गैस्ट्रोजॉइड्स माने होछन फीडिंग जॉइड, माने दोस टाइप ऑफ जॉइड और दोस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच परफॉर्म द फीडिंग एक्टिविटीज विथ ए माउथ एंड टेंटाकल। डैक्टिलोजॉइड काଣା Dactylozoids which are used for defense are polyp without mouth, usually wearing tentacle. Dactylozoids रे tentacle रहसी। Next, gonozoid. Gonozoid काଣା gono means gonad. तो those zoids which have gonads और जोन माने कि रिप्रोडक्शन रे पार्टिसिपेट करबे से माने होछन गोनोजॉइड। तो ई केस रे हम देखमा এটা গোটে হচ্ছে গোনোজয়েড, এটা হচ্ছে গোটে টেন্টাকুলোজয়েড, এটা হচ্ছে ড্যাকটিলোজয়েড, এটা হচ্ছে স্কেলিটোজয়েড। এটা জয়েডস মানকর এটা एग्जांपल মানে আছে ডায়াগ্রামটা। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसा। तो मेडुसा गोटे फ्री स्विमिंग जॉइड थिला, तो तार ने बहुत सारा मॉडिफिकेशनटा है सेटा देखमा। गोटे होচ্ছে नेक्टोफोर और नेक्टोकालिस। नेक्टोकालिस काଣା स्विमिंग वेल इज ए मेडुसा मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
स्विमिंग जॉय एटा निमाटोफोर और ब्रैक्ट और फ्लड भी क्वेश्चन एटा के इटा काना ब्लैडर लाइक इनो कि बहुत सारा गैसेस स्टोर कर रही सेटा होचे निमाटोफोर filled with mixture of gases helping the colony to float on the surface. What is phylozoite? Phylozoites are leaf-like bracts stored with nematocysts and soft to protect the colony. What is gonophore? Gonophore bear the gonad, dioecious and produce germ cell for reproduction. Type of polymorphism. एबे देखमा हमें कितने टाइप रो polymorphism अछि. तो बेसिकली टाइप ऑफ polymorphism रे patterns of polymorphism टा परेसी. तो टाइप रे काना परमा हमें a few cylindroids such as hydra, sea anemone are monomorphic in which only polyp stage is found but other cylindroids exhibit polymorphism. जेंता कि sea anemone, hydra इमाने सब monomorphic. Dimorphic काना many hydrozoan colonies like Tubellaria, Campanularia only two type of zoid that is feeding stage gastrozoid and medusa or nectophore that bud up from the stem of gastrozoid. মানে gastrozoid আছে gonozoid আছে এটা হচ্ছে dimorphism. What is trimorphism? Beside gastrozoid and gonozoid there is another zoid that is known as dactylozoid. Some species like Obelia, Plumularia are trimorphic because beside gastrozoid and medusa they also have medusa producing gonozoid or blastostyle. ताकर पाखरे gonozoid माने भी अछन. That is why trimorphic. What is polymorphism or polymorphic? In order Siphonophora such as Diphyces, Halistema, Stephalia, Phycelia, zoids are so much modified that they appear like organs of single body rather than individuals of a colony. In Phycelia, zoids are in unit which bear gastrozoid. माने जन Phycelia टा अछि तार ने जन zoids माने अछन से माने gastrozoid, dactylozoid, tentacles bearing gonopore, gonozoid एटा सब Phycelia रे अछन. In Vellela purpura there is single large central gastrozoid with a mouth around which are arranged concentric rows of gonozoids and dactylozoid. The whole colony look like single individual. Vellela purpura सब कना चोनकर पाखे गोटे सेंट्रल gastrozoid अच्छे with a mouth around which are arranged concentric rows of gonozoid and dactylozoid. Origin of polymorphism. अच्छा polymorphism origin केनता हिथिला इटा लागि दुईटा थ्योरी अछि गोटे होछि polyorgan theory गोटे होछि polyportion theory. What is polyorgan theory? This theory proposed by Huxley holds machine of Muller, according to which individuals of a colony are actually organ of a medusaur individual which have multiplied and migrated from their primitive position to the माने polyorgan theory कहउछि कि पहला जन जोइड थिले सब मेडुसा ही करथिले तापर सेमनकर जोइडटा शिफ्ट ही करी करंट पोजीशन के शिफ्ट ही होला एटा होछि polyorgan. And what is polyportion theory? Polyportion theory was proposed by Likert, Vogt and Gegenbaur-Kolliker. Kana question according to this theory, colony is not single individual but various part of colony are modified individual which have changed their structure due to division of labor. ये कहउछि कि जतकी भी जोइड अछन सेटा सिंगल ही कर नै थई सेटा होछन डिफरेंट जोइड हम जेन काहे कि सब जोइड माने अलग अलग है. तो पॉलीपोर्शन थ्योरी गोटे एक्सेप्टेबल टाइप रो थ्योरी है. According to this theory, colony is not a single individual but various parts of the colony are modified individual which have changed their structure due to division of labor. They have all modified from the primitive zoid which was a polyp. That was a kotha. Next, what is significance of polymorphism? The phenomenon of polymorphism is essentially one of the division of माने इटा गोटे सिग्निफिकेंस कना कि सेने गोटे डिविजन ऑफ लेबर टा होछि माने each individual जोइड टा के हम गोटे स्पेसिफिक फंक्शन दि दोछु तो तांकर वर्क टा इजीली ही परबा माने गैस्ट्रोजोइड टा फीडिंग पर्पस, डैक्टिलोजोइड टा डिफेंस पर्पस, गोनोजोइड टा रिप्रोडक्शन पर्पस माने सबकर स्पेसिफिक एक्टिविटीज बदली गला एटा गोटे सिग्निफिकेंस डिविजन ऑफ लेबर. Thus polyp are modified for feeding, protection and asexual reproduction while medusa are sexual reproduction. The distribution of function among diversified individuals and their subsequent modification in cylindroid may have resulted from their initial simple organization and lack of specialization. तो इजन polymorphism तो सो हेबार गोटे आ गोटे रीजन टा कणा कि माने गोटे सिलिंडर टा गोटे होचे सिंपल ऑर्गेनिज्म आ सेमनकर पाखे किछि स्पेशल एडवांस कैरेक्टर नै ना और एडवांस ऑर्गन नै ना तो से माने polymorphism एग्जिस्ट करि पारुछन. Polymorphism give the colonies competitive edge in protection and food gathering and eventual survival. तो polymorphism कणा करूछे which provide competitive edge in protection and food gathering माने food gathering रे हेल्प करूछे आ तांकर सर्वाइवल रेट टा के भी बढ़ाउछे. आ गोटे होचे मेटाजेनेसिस इन सिलेंटेरेटा. मेटाजेनेसिस बेले कणा इट इज नथिंग बट आमे गोटे पॉलिप स्टेज रु मेडुसा बनबाटा आ मेडुसा स्टेज रु गोटे पॉलिप बनबाटा एटा होचे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दैट इज आमे मेटाजेनेसिस बोली कहिसु ताके एटा होचे मेटाजेनेसिस.
ओके दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस इन सिलेंडरेटा। एटा गोटे दुईटा जाक मेल आउ फीमेल आसबे स्पर्म मेल मेड्यूसा फीमेल मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म स्पर्म आसबा ओभा तापर जाइगोट जाइगोट ब्लास्टुला ब्लास्टुला प्लानुला लार्भा लार्भा लु पॉलिप देखो केस रे लार्भा आ गोटे मेड्यूसा नहीं बनी लार्भार पॉलिप लार्भा बनवा यंग पॉलिप सॉरी प्लानुला लार्भा बनवा यंग पॉलिप तो फुल्ली डेभलप होगा से फुल्ली डेभलप स्टेजटा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी करी सेक्सुअल मेड्यूसा फॉर्म गिव करवा सेटा होचे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस इन सिलेंडरेटा। ओके तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स आज वीडियो एतकी होप तुम मैंने सब भल कर बुझी पार्थिव कॉन्सेप्ट के थैंक यू।